कल शाम को 5 बजे हम लोग बस से यहाँ से रवाना कहाँ हुए थे? तो कुछ लोगों की संख्या मुझे दिखाई नहीं दे रही है। जाने के वक्त मैंने सबको बस में डाला था, आने के वक्त मैं पहले आया, तो मुझे नहीं मालूम whether they are here or not. Anyhow, we'll not waste our time. It's my pleasure to introduce to you the first speaker for the day, Mr. Subramanian Iyer. Mr. Subramanian, who is a renowned sales trainer and management leader, during his entire career span of 20 years, he believed in an efficient and targeted tuning of sales teams and process. His skill lies in tapping average sales employees' potential and making the best sellers out of the talented ones. This enhanced power provides companies with increased sales. Today we present the e-journey of an ace agent. Please welcome the great visionary trainer, Mr. Subramanian Iyer. Hello. Good morning, entrepreneurs. Good morning. How are you all doing? Fine. I'm blessed because the morning hours normally are the hours of divine worship. Saraswati is one of the goddesses we worship, and the time when we worship Goddess Saraswati is the time when I have been given an opportunity to address great human beings who are into the most noble profession on planet Earth, and that is to secure people's life, health and wealth. So how about a huge round of applause for each one of you for your own self. And can this applaud for your own self be louder and better? So a combination of English and Hindi should be fine? Yes. Great. Or exclusive Hindi or Marathi? Combination. Alright, great. So without taking much of your time, since I have exclusive 40 minutes to present to you all, I have a small effort from my end to talk to you about the e-journey. A lot of esteemed people who have come in here on the stage, लोग आए हैं यहाँ पे कल से, और in fact मेरे ख्याल से from the 13th. Yes, sir. Yeah, so you have seen so many people. So excuse me if a couple of things appear repetitive, but even if it's repetitive, इसको एक gentle reminder करके ले लेना और इसे घर ले जाना और अपने हिसाब से इसको अपनी जिंदगी में implement करने की कोशिश करना. Yeah? Yes. So that's me. You can know more about me from my website, awiseloser.com. That's my website. You can get to know more about it. All right. So couple of myths and couple of facts. जब हम डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं, ई वर्ल्ड की बात करते हैं, तो कुछ मिथ आज मार्केट में है और उसको हो सके तो अपने तरफ से फैक्ट्स के हिसाब से आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले लोगों को लगता है कि प्रमोशन काफी होना चाहिए, प्रमोशन काफी होना चाहिए, प्रमोशन काफी होना चाहिए, हमारे बिजनेस को प्रमोट करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, जबकि फैक्ट यह है कि यू आर नॉट सपोज टू फोकस ऑन प्रमोशन इन द करंट डिजिटल वर्ल्ड. You are supposed to focus on engaging with your customers in the current digital world. You need to constantly stay engaged with your customer. It is not about making a pamphlet, it's not about making a brochure, it's not about making collaterals, marketing collaterals, it's not about making yourself known in the Facebook, known yourself in the LinkedIn. It's about engaging with your clients. It's about engaging with your prospective clients on a day-to-day basis. So the shift has to be from promoting yourself to engaging yourself with your existing clients. I mean, you all are far senior enough to, I'm sure आप लोग यहाँ से तो काफी आगे निकल गए हो और
ये आज की तारीख में आप लोगों के लिए उतनी बड़ी मैटर नहीं है। प्राइस, This business has never been about who is the cheapest term insurance seller, सबसे cheap term insurance कौन बेचता है, सबसे cheap health insurance कौन बेचता है। ये धंधा प्राइस का तो कभी था ही नहीं और ना कभी रहेगा। ये धंधा अगर है तो वैल्यू का धंधा है। So anytime you get into the e-world, जब आप अपने आप को e-world के साथ जोड़ने की कोशिश करते हो तो हमेशा अपने एंगेजमेंट स्ट्रैटेजी में, मैं प्रमोशन स्ट्रैटेजी नहीं कहूंगा, हमेशा अपने एंगेजमेंट स्ट्रैटेजी में ये देखना कि मेरे हर एक हरकतों पे, हर एक स्ट्रैटेजी पे, हर एक एक्टिविटी पे व्हाट वैल्यू एम आई एडिंग टू माय प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट और माय एग्जिस्टिंग क्लाइंट। सो दिस वर्ल्ड हैज नेवर बीन अबाउट प्राइस, इट हैज ऑलवेज बीन अबाउट वैल्यू क्रिएशन। सो एनी डिजिटल स्ट्रैटेजी दैट यू ऑल अडॉप्ट, every activity, keep thinking about the value that you will add for your client. Are we together? Many people think the digital world आ गया है, मेरा धंधा खा रहा है, you know, लोग term insurance digital से खरीद रहे हैं। You know, I know some of the people outside doing this business might have this kind of a perception, but the fact is, digital world is an enabler. ये आपका एक साथी है, ये आपके साथ रहेगा। इट इज नॉट अ कॉम्पिटिशन, डिजिटल वर्ल्ड इज अ टूल, इट्स अ टूल फॉर यू। ये आपका एक रिसोर्स है, ये आपका एक साधन है, ये आपका एक टूल है जिसको आपको साथ में लेके चलना है। एट द एंड ऑफ द डे यू आर द बॉस एंड डिजिटल वर्ल्ड इज जस्ट एन एनेबलर। So kindly do not treat it as a competition. In fact, आप लोग काफी सीनियर हो, आप लोग मैच्योर हो, आप लोग परफॉर्मर्स हो इस बिजनेस में, आप लोगों को ये समझ गया होगा कि जब कोई व्यक्ति आज इसी ई वर्ल्ड के कारण, इसी डिजिटल अवेयरनेस के कारण, जब यंग इंडिया डिजिटल वर्ल्ड के थ्रू अगर कुछ खरीदती भी है, द गुड न्यूज इज उसका अवेयरनेस ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है, उसका अवेयरनेस ऑन इंश्योरेंस ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है। और स्वाभाविक है जब उसका अवेयरनेस बढ़ रहा है, आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी खुल रहा है। सो इफ यू हैव टू टेक 15 मिनट्स टू एजुकेट योर क्लाइंट because of the fact that your existing client or a prospective client has already ventured into the digital world, sought information, उन्होंने information ले ली है, जहां पे आपको शायद 20 मिनट लगता था अपने क्लाइंट को समझने के लिए, आज के तारीख में सिर्फ शायद 10 मिनट लगता है, बाकी 10 मिनट उसने ऑलरेडी होमवर्क कर लिया है। So digital world is an enabler of your business and it's never a competition for your business. Product is the king, product is the king, product is the king. लोग LIC ही लेंगे, LIC लेंगे, product is the king, product is the king. My dear friends, because of the digital world today, experience is the king. When your client, when your prospective client sees your Facebook account, sees your website, sees your LinkedIn, interacts with you digitally, interacts with you the way he interacts with you, what experience are you giving is what will make you exclusive vis-a-vis your other counterpart. So, in fact, experience was the king always, पहले से ही. It was never the product, it was always the experience that mattered. But because of the digital world, today each one of you have enough opportunity to give that required experience to your surfer, to your prospective client, when he gets into your website, when he gets into your Facebook account, when he is actually interacting with you virtually. So understand, my dear friend, when you plan your digital strategy, focus on what experience are you giving, what pre-sales experience are you giving, what sales experience are you giving, and what post-sales experience are you giving. So it has always been about experience, it is always about experience.
and not about the product. It is a digital world, it is a digital world, it is a digital world, that's a myth. But the fact is, it is a trendy digital world. It's not just a digital world, it's a trendy digital world. This is a term that I have used, right? And I will definitely explain what is this trendy digital world to each one of you as I move ahead. Are we together? Yes. Yes. इंश्योरेंस इज नो लॉन्गर अ लुक्रेटिव बिजनेस. ये शायद यहां पे कहने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल अगर ये मिथ अगर है तो विद जस्ट 3.69 पेनिट्रेशन हाउ कैन इट नॉट बी लुक्रेटिव? आज भी भारत देश में द पेनिट्रेशन ऑफ इंश्योरेंस इज जस्ट 3.69. हाउ कैन इट नॉट बी लुक्रेटिव? इट इज, it was, it is, and it will always remain a lucrative business. There is enough that we can talk on this. In case we get time, I would like to answer this, elaborate it, and explain to you. You might be already aware, but if there's anything that I can add value by talking about it, I'll be very happy for you. Are we together? Yes. Yes. Okay, what is the most valuable asset of any business today in the digital world, especially a business which is related to concept? Our business is a concept business. Insurance is a concept. Yeah, when it comes to sales strategy, when it comes to sales planning, insurance and our business is considered to be a कॉन्सेप्ट. यस और नो? तो मुझे बताओ, किसी भी धंधे में आज के तारीख में एक बिजनेसमैन का, एक एंटरप्रेन्योर का सबसे बड़ा एसेट क्या है? He himself. He himself. Yes sir. Knowledge and human knowledge and experience. Respect sir. Customers I respect. How he uses his intellect to convince the client about his client's good. God bless. Thanks a lot for your participation. Absolutely right. I mean, nothing is wrong in this divine room. Everything is right. Attitude. Yeah. Opportunity. Attitude. His network. Is network. Network is your network. Your network is determined by your network. Very, very relevant to your business. You want to clap? You may clap. Your network is determined by your network. Alright? According to me, whatever little I do in my life and whatever little research and whatever little book I have read, the greatest asset today in the digital world for any businessman is attention, 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 attention. Are you being seen in your website, or are people watching your website? Are you just being seen, or are you being watched? हम सबको पता है. Watch. Are you being watched? आज आप ऐसे क्या हरकतें करते हो, ऐसे क्या एक्टिविटीज करते हो, ऐसे क्या करते हो जिससे कि लोग आपको सिर्फ ना देखे, लोग आपको समझे, और समझने के लिए 1-2 मिनट मोबाइल पे बिताए आपका वीडियो देख के, या आपका राइटअप देख के, या आपका एंगेजमेंट देख के. We all know what do we do while we are in the flight. We all know what do we do while we take a break. The first thing we do is switch on the mobile. Yes or no? और मोबाइल देखने के बाद इस उंगली का जो इस्तेमाल करते हैं, yes or no? घुमाओ 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 घुमाओ. Just scroll, 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 scroll. The entire world is scrolling today. And while they are scrolling, are they immediately being, are
आता है, आर पीपल पॉजिंग? क्या लोग पॉज करते हैं? तो हर एक बिजनेसमैन अपने डिजिटल वर्ल्ड के स्ट्रैटेजी में अगर ये इंश्योर करता है कि पीपल आर पेइंग अटेंशन टू व्हाट यू आर डूइंग, बिकॉज दुनिया तो आपको देख रही है, यू आर बीइंग सीन, आर यू बीइंग वॉच्ड? आपकी एक हरकत को देखकर क्या एक लोग 1 मिनट या 30 सेकंड बिताते हैं आपके प्रमोशन या आपके एंगेजमेंट स्ट्रैटेजी को देखकर? अगर उसका आंसर हां है, so my dear entrepreneurs, you are heading towards success in your digital strategy. And if you're not being watched, you're only being seen, you need to relook onto your digital strategy. And needless to say, it all begins from your website. 80% of insurance agents have websites of 2,800 rupees. मेरा भी एक बना दे, मेरा भी एक वेबसाइट बना दे और प्रोडक्ट्स को उसमें हाईलाइट कर, and you just have another website. So before, and as it happens in any new thing that happens in our country, I do not know abroad, कि कुछ भी आ जाता है, we all try and absorb it in bits and bits. बाद में जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो पता चलता है यार पूरी खिचड़ी बन गई है. Alright? So if I may proceed ahead, all I want to say is before you get into the digital world, hire a digital consultant who can first lay down your digital strategy. And after the digital strategy is laid down for you, he will lay down the digital calendar. And after you lay down the digital calendar, go by the strategy, go by the calendar, and go through the proper channel. Don't get excited by a 2,000 rupees ka website. Because before I move ahead, your greatest asset in today's digital world is going to be the attention that you attract, and do whatever is required to seek that attention from your prospective client. Are we together? Yes. How do you build your new age asset for your business? ये जो एसेट है, अटेंशन का जो एसेट है, आपका सबसे बड़ा बिजनेस में धंधा, आपका सबसे बड़ा एसेट goodwill was once upon a time your asset, but this goodwill is now enhanced to attention. What attention are you seeking? Attention obviously for good things. And how do you build this asset in your business moving ahead? Are you all comfortable? Yes. Sure? Sure. So how do you build your new age asset for your business? Shift from being seen to being watched. When the world is scrolling on their smartphone and they're seeing 2,000 ads on insurance, are you grabbing their attention for at least 30 seconds is what you need to shift your thought process when you talk about a digital strategy. Shift from you calling people to being called. आज ऐसे क्या हरकतें करते हो कि लोग आपको फोन करें? एक सेल्स कोच हूं, एक सेल्स ट्रेनर हूं, लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस को जिंदगी का 8 साल दिया हूं. I have served the ICICI Prudential and the Tata AIG Life before standing on this auspicious stage.
और एक बार लाइफ इंश्योरेंस बेच दिया तो दुनिया में हम कुछ भी बेच सकते हैं। और लाइफ इंश्योरेंस ने मुझे ये सिखाया दोस्तों, और दोस्त कह सकता हूं ना? Yes. तो सेल्स ने और खास करके लाइफ इंश्योरेंस ने मुझे ये सिखाया कि भैया, ग्रेट सेल्समैन नेवर सेल, ग्रेट सेल्समैन नेवर सेल, पीपल बाय फ्रॉम हिम बिकॉज पीपल लव टू बाय। हम सबको चीजें खरीदना पसंद है, कोई हमको बेच के जाए हमारा ईगो हर्ट होता है। तू कौन होता है मुझे बताने वाला कि ये अच्छा है कि बुरा है? मुझे तो बचपन से, मुझे जब पैदा हुआ था, पहला सांस लिया था, तब से मैंने दुनिया सीख लिया है। तू कौन होता है मुझे बताने वाला? दैट इज ह्यूमन ईगो। वी डोंट लाइक पीपल टीचिंग अस एनीथिंग, वी डोंट लाइक पीपल प्रीचिंग अस एनीथिंग। We love to buy a concept, we love to buy a product, we love to buy our dream. So people love to buy in sales, especially in your business. Are you being called कि सर आप आके जरा मुझे समझाइए? और जब वो दुनिया आपके जिंदगी में आएगा, जो आई एम श्योर काफी लोगों की जिंदगी में आज वो दुनिया आता है, उस वक्त मैं ऐसे क्या हरकतें करता हूं मेरे बिजनेस में, मेरे एंगेजमेंट स्ट्रैटेजी में, मेरे डिजिटल स्ट्रैटेजी में, मैं ऐसे क्या हरकतें करता हूं कि मैं जब किसी के ऑफिस में जाऊं, वो व्यक्ति मेरे लिए बैठा है। उसके लिए काफी से हरकतें हैं। we can talk about those strategies. So primarily we need to shift our thought process from calling people to being called. So whenever you sit with your mentor, with your guru, with your digital strategist, ensure that you have a strategy. In today's world, we need to know what to talk, when to talk, where to talk, and how to talk. And only a professional PR company can make it happen for you. So do not ignore the power of PR strategy. अरे ये सब शाहरुख खान और अमिताभ वाली दुनिया, ये मेरे दुनिया के लिए नहीं है। आपके दुनिया के आप अमिताभ बच्चन हो, हाँ या ना? Yes. अब ये सबसे पहले कौन समझना चाहिए? We need to understand that I am the Amitabh Bachchan of my business, and I also require a good PR. One of the important things that is required in this business is that successful people in this business need to talk to the world that they are successful. आज MDRT सिर्फ LIC के कंपनी में पता होता है कि वो MDRT है। Those unemployed youths in the market who are looking out for an opportunity other than job, they just do not know what is an MDRT, because the successful people never talk about it. They are kings in their life insurance company, but in the outside world, they just do not. Outside world doesn't even know what is an MDRT, what is a COT, what does it call for going for that convention. So successful people need to talk about it and need to have the right PR strategy in place. Do not ignore the power of PR strategy. Be an asset light organization. Be an asset light. Non-revenue generating चीजों के लिए कंप्यूटर को रखो, और रेवेन्यू जनरेटिंग के लिए लोगों को रखना। Lot of things can get outsourced, lot of things can be enabled through IT. जो भी नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है आपके धंधे को, उसको IT के साथ लगा देना। IT जिंदगी भर आपके साथ रहेगा, लॉयल रहेगा, आपके लिए काम करेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और जहां पे इंसानों की जरूरत है वहां पे लोगों को रखना। एंड बी एन एसेट लाइट ऑर्गेनाइजेशन। शिफ्ट फ्रॉम डिजिटल स्ट्रैटेजी टू ट्रेडी डिजी स्ट्रैटेजी। इस पे मैं आ रहा हूं। आज टुगेदर? यस। व्हाट इज दिस ट्रेडी डिजिटल स्ट्रैटेजी? ट्रेडी डिजिटल स्ट्रैटेजी, ट्रेडी डिजी स्ट्रैटेजी, बेसिकली यू नीड टू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल way of doing business
aligned with the digital way of doing business. Do not try to totally go digital. आप लोगों ने 20 साल से, 25 साल से, 40 साल से जो भी ऊपर वाले के दुआ से ट्रेडिशनल वे से बिजनेस किया है, that by God's grace is relevant even today. Let's clap for each one of you. आपने जिस तरीके से इतने सालों से धंधा किया, ये irrelevant नहीं हुआ है, ये redundant नहीं हुआ है, ये obsolete नहीं हुआ है. You need to have that traditional flavor even today. The traditional way of maintaining relationship, building relationship, serving the client is relevant today. सब कुछ टेक्नोलॉजी कभी लिया नहीं है, ना कभी ले सकेगा. A technology will never represent human brain and definitely can never replace emotions. वो आप ही के साथ रहेगा. So Trade Digit strategy is about having a combination of traditional processes, traditional way of doing business, and aligning that with the digital world. And that, according to me, is Trade Digit strategy. So you need to adopt Trade Digital strategy in sales versus marketing. Very simple. Anything that is related to marketing, you need to devise the digital world, which means identify a segment, serving your client, knowing your client, communicating to your client, सब चीज को डिजिटल करा दो. लेकिन ये सब हरकतें करने के बाद जब आपके पास इंक्वायरी आती है, फिल्टर्ड इंक्वायरी आती है. How many of you are aware that in Facebook there is something called as business.facebook.com? How many of you are aware? Business.facebook.com में दोस्तों you can actually set the Facebook को आप इंस्ट्रक्ट कर सकते हो कि भैया मेरा खरीदार कहाँ बैठा है, मेरा खरीदार कौन है, मेरा सेगमेंट कौन है. जब मैं कोई भी हरकतें करता हूं, उस सेगमेंट को मेरा मैसेज पहुंचना चाहिए. इस दुनिया में आज के तारीख में नया शादी जिसका भी हुआ है भारत देश में, उसको मेरा मैसेज पहुंचना चाहिए. इस दुनिया में वो हर एक व्यक्ति जो 30 साल का है, उसको मेरा मैसेज रिटायरमेंट पे पहुंचना चाहिए. थ्रू business.facebook.com you can actually instruct Facebook कि भैया मेरा मैसेज किसको जाएगा. अगर आपका मैसेज फेसबुक में घूम रहा है और 55 साल के आदमी को रिटायरमेंट का मैसेज जा रहा है, you have actually wasted your effort. So everything that helps you generate your lead, anything that helps you generate your lead has to go digital. और वो फिल्टर होने के बाद जब आपको एक फिल्टर्ड इंक्वायरी आता है, वहां पे you need to go in style and do your business traditionally by your personal intervention. So sales has to be still done by a human being, but anything before sales, generation of a prospective quality lead, make it digital. Are you together? Yes. Revenue versus non-revenue generating activity. वो हर एक एक्टिविटी जिससे रेवेन्यू जनरेट होता है, वो हर एक एक्टिविटी जिससे आपके गल्ले में पैसा आता है, वो हर एक एक्टिविटी which gets money into your bank account has to be done traditionally by you. And every other non-revenue generating activity like accounts करना है, tax भरना है, नया इंक्वायरी जनरेट करना है, कस्टमर को थैंक यू मैसेज भेजना है, जो भी आपको लगता है एनीथिंग, या फिर वॉट एवर यू फील इज नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग, कि मेरा वक्त ये नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी पे नहीं जाना चाहिए, मेरा कीमती वक्त रेवेन्यू जनरेटिंग पे जाना चाहिए. वो हर एक एक्टिविटी जो आपको लगता है नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग है, जहां से पैसा जहां पे खर्चा होने वाला है, वहां पे मेरा पैसा आने नहीं वाला है, उसको डिजिटल कर देना. वो हर एक एक्टिविटी जहां से आपको पैसा आने वाला है, फॉर एग्जाम्पल गोइंग ऑन एन अपॉइंटमेंट इज रेवेन्यू जनरेटिंग और नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग.
Generating an appointment is revenue generating or non-revenue generating? Non-revenue generating. एक बार अपॉइंटमेंट जनरेट हो गया, जिसपे आपको टेक्नोलॉजी को लेके आना है, उस अपॉइंटमेंट में स्टाइल में जाना, ये रेवेन्यू जनरेटिंग है। यहां पे आपके ट्रेडिशनल प्रोसेस का इस्तेमाल करना, या एंड build a saleable business. How many of you want to sell your business? How many of you want to sell your business? Successful people may not sell their business. Successful people, you may or you may not sell your business. However, you as an entrepreneur, you need to know always what is the value of my business. कि कल for whatever reason अगर आप किसी इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो आपको खुद को पता होना चाहिए कि भैया मेरा धंधे का वैल्यू क्या है। विश्वास करो, जब ये सवाल मुझसे पूछा था, मैं भी इमोशनल हो गया था, मैंने भी हाथ ऊपर किया नहीं, बोला मैं इतना सब कर रहा हूं, मेरा धंधा बेचने के लिए थोड़ी कर रहा हूं। लेकिन बाद में उस सज्जन ने मुझे समझाया, बेटा तुझे बेचना है नहीं बेचना है, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते तुझे इतना तो पता होना चाहिए कि कल के तारीख में किसी इन्वेस्टर के सामने बैठा हूं और इन्वेस्टर अगर ये सामने से सवाल पूछते हैं, बेटा तेरा धंधे का वैल्यू क्या है, तुझे मालूम होना चाहिए। You need to know that today if I have to sell my business, what value does it attract? So that you can talk to people accordingly. कल कोई एक इन्वेस्टर आता है, या आपको आज के तारीख में मिलना चाहिए भैया मार्केट मेरे धंधे को कैसे देख रही है, हाउ आर पीपल सीइंग माय बिजनेस, यू नीड टू नो एज एन एंटरप्रेन्योर, एंड हेंस इन योर ट्रेडी डिजिटल स्ट्रेटजी you need to build a saleable business. At any given point of time, you need to know how does the outside world value your business. So what are the parameters for that? I'll talk. I'll definitely talk. Yeah? Thank you for showing your interest. Thanks a lot. Do I have time to answer some questions? Yeah. Thanks a lot, sir. Yep. So you said you should know what is the value of your business. Kitchen What are the value, brand value. So, what are the parameters on which you decide the value of the business? Of the many things that you need to know, of the many parameters that you need to know, one thing that you need to know, which applies to me also as an entrepreneur, is to know how do I read my own balance sheet. How many of us, as an entrepreneur, I need to first know, I may not make my balance sheet, but I need to know to read my balance sheet and understand what does it take, how does people value my business. The first thing of the many things, sir, we need to know is how do I read my balance sheet. But so what business balance sheet and personal liability, personal balance sheet are the same. I meant the business balance sheet. See, today I can understand your business is more driven individually, but many of you in this business also can build an organization. We can still think corporate, which I'm sure many of you are. So it's no longer an individual business. It's a building an organization. This obviously is applicable to insurance professionals who are building an organization, who are in the process of building an organization. So obviously individually is one story, but through your individual brand, have you built an organization? Are there around 20, 30 people, 100 people employed in your organization? Because are your clients coming to you, seeing you as an organization or seeing you as an individual? Your MDRT, COT is your individual achievement, but your business growth will be based on your organization. How long are you going to continue to stand individually and do things in life? Can you build an organization? So this is applicable for people who are building an organization. Who are still convinced about their individual performance, absolutely that is still relevant, you may go ahead. So it's about organization's balance sheet and many other things, which obviously as time passes, there are professionals who will let you know
how do you build a value for yourself? Can give us one example. Like One example. of Valuation of your business. yeah. So One what do you think with the valuation of business today? All right. What are the kind of assets you have? What is your profitability? How productive was your power? How productive is your resources? Okay. What is the market that is seen in the future? And to that market, how is your business built to cater to that market? Today, if I were an investor, if I have to invest in your money, सबसे पहले मैं आपका क्या देखूंगा सर? सबसे मैं प्रोजेक्शंस देखूंगा. प्रोजेक्शन से पहले आपके कंपनी का वैल्यूएशन के नाम पे आपका प्रोडक्टिविटी देखूंगा, आपका प्रॉफिटेबिलिटी देखूंगा, आपका पास्ट परफॉर्मेंसेस देखूंगा, आपका एपेटाइट टू रिस्क देखूंगा कि आप कितने रिस्क की एपेटाइट को देखूंगा कि भैया ये व्यक्ति आपके तरफ. और इंश्योरेंस के धंधे में डू आई नीड टू टेल यू द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द फ्यूचर? 3.69 का पेनिट्रेशन है. How can we not afford to build an organization? And how many insurance companies exist in US? Thousands. Are we all aware that in terms of insurance, the most organized country in the world is US? Yes. Everything in this country, as far as insurance is concerned, it's organized. Yes. As a organized country में, there are 5,696 insurance companies in an organized country like US, and each of those 5,696 companies are being built by people like you. अब इंडिया के सिनेरियो में आइए. 3.69 के पेनिट्रेशन में अगर यूएस जैसे कंट्री में 5,000 इंश्योरेंस कंपनीज है, तो कैन यू इवन थिंक ऑफ द काइंड ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज वी कैन बिल्ड इन द कंट्री ऑफ इंडिया? More than that. Lakh, the sky is the limit, and today even sky is not the limit. So you are the people who can actually make it happen. If an organized country like the United States of America can have 5,696, I can show you a slide if you want. What are the wonders that you all can create? So sir, it's about organization and how we build that organization. Yes sir? Yeah. So one more question. One minute. Hello, please. Asset-like organization. Yeah. As you have mentioned, asset-like organization. Yeah. What you want to describe? Asset light का मतलब है सर, आज के तारीख में because of technological advancement, you don't have to have 10 officers, 20 officers. You don't have to have 500, 600 people. You can have people to the extent of required. Okay, many of the things through technology, you can save money, and you can reduce your assets and build your profitability. आज यहाँ पे बैठ के मैं सातारा में धंधा कर सकता हूँ, यहाँ पे बैठ के मैं बैंगलोर में धंधा कर सकता हूँ because of technology. यहाँ पे बैठ के I can address 20 people of my insurance agents through Skype. तो मुझे सब जगह जाके ऑफिस लेके उसका भाड़ा देते रहने की जरूरत नहीं है. I can keep my asset light, build my profitability. Yes sir. So are you a company this or wise user? Yeah. What do you mean? Excuse me, please, sir. Sorry. Yeah. See, friends, we have time constraints, and you just can't go on asking. Sorry, don't take it individual. So the next speaker gets less time, and we have seen it yesterday. I'm not talking किसी की गलती है किसी. And these people on the platform, they love speaking. Am I right? Subramanian Iyer ji, Subramanian Iyer ji, Subramanian Iyer ji. I'm not saying anything about you, but you know what he was doing throughout his course of discourse? He was repeating. और एक ही चीज मैं आपको बोलूंगा इनके बारे में. इन्होंने डिजिटल के बारे में बहुत कुछ कहा, but we are all very much familiar that the latest Chandrayaan, which was sent by who? Human being, scientist. Thank you very much, sir. God bless you and wish you all the best. I'm always available during the breaks and we can talk individually. Thanks a lot for your time. I request Prem ji to kindly hand over a token of love to Mr. Subramanian Iyer ji. God bless you, sir. Thank you.